Hello students, how are you? Hope all of you fine at home. I am Mrs. Mulpit Kaur, your geography teacher from California Public School. Yes, dear students, today's date is 6 July 2020 and we are doing the 7th class 4th chapter Weather and Climate. In this chapter, firstly we have to discuss about the some elements of the weather, just like temperature, atmospheric pressure, humidity, precipitation, forms of precipitation. Now we have to discuss about the winds. What are the winds and types of the winds? So, as you know that air always move from high pressure area towards the low pressure area. कहते हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर है वो मूव करती है. सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? विंड. जो वर्टिकली मूवमेंट है एयर की उसे हम क्या कहते हैं? एयर करंट. विंड इज ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज द ब्लोइंग. कहते विंड का नेम है कि इन विच डायरेक्शन दैट इज ब्लोइंग, दैट्स नेम इज द विंड्स नेम. सो डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द विंड इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. कहते कुछ फैक्टर से हम विंड की डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट, द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द टू प्लेसेस गिव अस द प्रेशर ग्रेडियंट. कहते जो डिफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टू प्लेसेस के बीच में उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं. प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, एकदम से प्रेशर हाई हो जाना. ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू प्लेसेस द स्ट्रॉन्गर द फोर्स. कहते हैं अगर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो जो स्ट्रॉन्ग है विंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस द क्रियोलिस फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स द विंड. कहते हैं क्रियोलिस फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. क्रियोलिस फोर्स क्या होती है? क्रियोलिस फोर्स वो फोर्स होती है जो विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है. In the northern hemisphere, it rotates into the, or we can say it moves into the right side, and in the southern hemisphere, Coriolis force moves into the left side to wind. The wind deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. The minimum deflection is at the equator. कहते सबसे कम कहाँ पर होती है? इक्वेटर के ऊपर, और मैक्सिमम पोल्स के ऊपर. रफनेस ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज फ्रिक्शन. कहते जो अर्थ सरफेस के ऊपर रफनेस है, नॉट द स्मूथनेस, उसे हम जो स्पीड है वो कम कर देती है विंड की. एंड आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. ओशन सरफेस इज स्मूथ एंड दस फ्रिक्शन इज लेस. कहते ओशन सरफेस प्लेन होता है, नो ऑब्स्टेकल, उसके बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है और वहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द विंड्स. मेनली permanent winds, seasonal and local winds. These are the main winds. So firstly we have to discuss about the permanent winds. The winds that blow regularly and constantly in particular direction throughout the year. कहते सारा साल सेम डायरेक्शन में चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स. The main permanent winds कौन सी हैं? trade winds, westerlies and polar winds. These are the permanent winds. हर साल सेम डायरेक्शन में they are moving. First, trade winds blow from the subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure belt. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ they are moving in both the hemisphere. Their direction is from the northeast and southwest. Northeast, southwest. In the northern hemisphere and from the southeast to the northwest in the southern hemisphere. These winds blow from cooler to the warmer areas and they are the dry regions. कहते कूलर से वार्मर की तरफ आ रहे तो ये क्या है? ड्राई विंड्स है. नेक्स्ट वेस्टर्लीज blow from subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऊपर की तरफ they are moving. So these are the westerlies in both the direction hemispheres.
The direction is from the southwest to the northeast northern hemisphere, northwest to the southeast in the southern hemisphere. And they are blow from warmer to cooler. Warmer से cooler की तरफ जा रहे हैं, moisture है इनमें. So they provide rainfall almost throughout the year, and due to their higher velocity, बारिश moisture ज़्यादा है, so they are also called the roaring forties. जब ये चलते हैं आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है. Next, polar winds blow from polar region to the subpolar region. Polar high pressure to the low pressure area in both the hemispheres. So these winds blow from northeast in the northern hemisphere and from southwest to the southern hemisphere. So these are very cold winds. ये काफ़ी cold है because we are moving from the polar regions. Next, seasonal winds जो season में चलती हैं. These winds are caused due to the unequal heating or cooling of the land masses and water bodies. यानी land masses और water bodies की unequal heating के कारण that are blowing. They can change their direction with the change in the season. कहते season change के कारण अपनी direction भी they have to be changed. मेन हमारी सीजनल विंड्स कौन सी हैं? मानसून, लैंड ब्रीजेस, सी ब्रीजेस. फर्स्टली मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड. कहते हैं सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं ड्यूरिंग द समर, और लैंड से सी की तरफ करती हैं ड्यूरिंग द विंटर. द वर्ड मानसून हैज बीन derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम which means season. So they are divided into the summer and the winter monsoon. कहते हैं हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, समर एंड विंटर. ड्यूरिंग द समर सीजन द लैंड इज हॉट एंड हैज़ अ लो प्रेशर एरिया, while adjoining sea is comparatively cool and have a high pressure area. The winds blow from high pressure area to the low pressure area. So from sea to land and causes the rainfall from June to September. कहते जून से सितंबर तक जो रेनफॉल होती है. During the winter season, the condition just reverse. Land cool, sea little bit warm. So from land to sea, they are moving while there is a low pressure over the Indian Ocean. So thus the winds blow from land to sea and bring the cool and dry weather in the months of November and November to February तक जो हमारा dry weather रहता है. Next, land breeze and sea breeze are experienced in narrow coastal regions. कहते coastal regions में ये blow करती हैं और ये unequal rate of heating land और sea की they have to be blow. Daytime land is heated faster than the adjoining sea, which creates a low pressure zone on the land and comparatively high pressure on the adjoining sea. So the winds from sea to land. Daytime sea breeze and nighttime land breeze. Land to sea. That is the land breezes. At the night time, the winds are blowing. So next is local winds. These winds are restricted to a small area and blow only during a particular period of a day of the year. कहते हैं सीजनल लोकल विंड्स होती हैं, एक स्मॉल एरिया में ब्लो करती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय के लिए उस ईयर में या दिन में. डेट इज कॉल्ड द लोकल विंड्स. दीज विंड्स कैन बी वार्म और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया फ्रॉम विच दे ब्लो. कहते जो विंड्स हैं वो वार्म भी होती हैं, कोल्ड भी होती हैं, और एरिया से पता चलता है कि कौन से एरिया से वो ब्लो कर रही हैं. द वेल नोन लोकल विंड्स हमारी कौन सी हैं? लू, फोहिन, चिंकू, Mistral, Harmattan, Scarrow, etc. These are our some local winds. In the plains of the northern India, very hot and dry winds blow in the afternoons during the months of May to June. कहते हैं मई और जून में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, ड्राई विंड्स, और उसे हम क्या कहते हैं? लू. What we have to call लू. So these are the local winds. In this video, what we have to discuss winds, types of the winds. Main 3 types: permanent, seasonal, and local winds. So hope all of you have listened it carefully. After that, do the assignment related to this video. So all of you take care, stay at your home,
Be safe and be healthy.